भवति यदनुभावात् एडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकल वचन चेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मनसि च। सर्वेभ्यः नमस्काराः. Today I am going to share with you some of my ideas from Vyakarana, because the study of language. So Indic thought model through language. So this shloka you might have heard, urdhvorthvam aruhye darsatattvam dhi pashyati shranti mavedayanti phalam tadaddyaih parikalpitanam viveka sopana paramparanam. The ideas that are generated through my studies are presented here, but they are definitely on the grounded on the roots of the ancient thoughts. Just I go to the salient points. Indic knowledge traditions and achar, I call it as practice, knowledge traditions and practice. There are three important aspects you should note. One is Parishkar. We always keep on making Parishkaras in our tradition. Nothing is standstill. Nothing is Siddhanta. Okay. So, people sometimes, आक्षेप करते हैं कि भारत की ज्ञान परंपरा रुक गई है. यस, रुक गई है, क्योंकि इसके सामने कुछ पूर्व पक्ष नहीं खड़ा हो गया. धीरे धीरे लोग जो है उसको बोलना शुरू कर दिया. बट इफ यू सी the Shastras and their nature, you will see continuously it's a pravaha, and there is always Parishkar, adaptability, and the tradition was always open for modification and alteration. Therefore, even today, it is open for alteration, modification. And it is accommodative, because so many Matabhedas are acceptable. Tradition always encourages democratic method of conclusion. I mean, you just come with many ideas and have a dialogue and then come to a conclusion if possible. Otherwise, again modify that conclusion, again come back and visit various ideas and then recreate your thought. The third one is application. So theories are not meant for studies. Theories are meant for application in life. So three important aspects we should keep in our mind, and it always continuously it is modifiable, and it is accommodative, and it is applicable. So now coming to this today, I go straight away to very important aspect that I am going to deal with. Today's three aspects of my life, my talk, next coming another session I will have. So this is very new model I am placing before you. In India, Bharatiya Jnana Parampara, if you see, from at least 10 to 12 schools, when I studied them in detail, and all of them are trying to address these three factors. So in front of us, there is an external world, which is universe, what we call content. The second one is our knowledge, cognition. It may be subjective or objective. So there is an internal world outside, world inside, and which is called cognition. So content and cognition. And the third very important connectivity between these two is communication, because there is an interaction between these two through one more important tool, instrument, that is Shabda. So word. So I call it an external world and internal world and word. Word and the world. One is content, and the second one is cognition. The third one is connotation or communication. So with these three nodes,
I want to deliver my talk. You note it down, CCC, Content, Cognition and Connotation. So we have three important theories in our Shastras. One is cognitive theory, that is Jnanotpatti Vada, theories of cognition, its nature, structure, mechanism, relation with the world, everything is discussed in detail. I think you cannot imagine the range of the discussions that is happening, that has happened and happening over the cognition. You know, one important theory of, I think, last 1,000 years, if you count, at least a few thousands of pages are produced on only one aspect, that is Anyathakhyati. Anyathakhyati means Brahma. Brahma means error. Error or illusion is discussed at the length of 1,000 years by all philosophers in India, even philosophical practitioners, only on one theory, theory of error, theory of illusion. What is illusion? People have come up with so many different theories. Even a theory says, Vimamsaka would say, there is nothing called illusion in the world, and everything is through cognition. And he has got theory and he has logic for that, and he has eradicated the error itself, removed the error, concept of error from the world. So beautifully, I think you should know all these things. The second idea is connotation theory. The theories of word and the world, relation between word and the world. Shabda-Shakti. It's very at length, grammarians, logicians, Buddhists, other philosophers have developed their own theories on Shabda. And the third theory is very, very important theory is causation theory, Karya-Karana bhava. And what is Karya and what is Karana and what is the relation, whether Karya exists, whether Karana exists, whether Karya-Karana have relationship at all. Cause and effect theory is very elaborate theory that we can see in Indian ontology. So keeping these three Vadas, theories, Jnanotpatti Vada, Shabda-Shakti Vada and Karya-Karana Vada, I think I come up with new models, new Indian thought models, which are very pertinent to today's discussion. Now, before undertaking an endeavor, we should think three important questions. We should ponder over three important questions. That is, Kimbhavayat, keeping this, as the base. I said CCC, keeping the triple C as the base. I want to proceed with these three questions. Kimbhavayat, what to accomplish. Kena-bhavayat, with what means to accomplish, and Katham-bhavayat, how to accomplish. These three questions are placed by Naiyayikas in Mimamsa Shastra. So, we have so much abundant information and knowledge in Indian knowledge tradition. But the problem is, for today's life, for today's discussion, what exactly we should understand and dig for and take them out and then use them, we don't know. We are in such a situation that we don't know what to pick up. We have so much. See, my proposition is, we should divide the Indian knowledge system with this idea, Vastu and Vastu. One is content and structure. We should understand both. First of all, instead of understanding the content, I would urge all of you to look at the structure. Unless and until we understand the structure of the building, we cannot analyze and assess the strength of the content. Therefore, if architecture engineers are present here, you will appreciate my idea that it is not the strength of the iron. It is the design of the architect is the
gives the strength to the content, iron. So the design is very important. The Indian thinker always, gave much attention to the structure of the knowledge, because the content remains the same. So then, why Indian Shastras are wrongly considered? People consider them very unscientific, and because they don't have any ideas and just they are filled with stories. No, they did not understand the structures. Starting from Vedas and Upanishads and Puranas, and then Shastras, and then Sutras, and then other Karikas, and then many other people did not understand the Indian thought models and knowledge structures. Therefore, many times people misunderstood. So I give 5 reasons. One is systematic presentation of thought is there, and the system is not understood. And the Western format is taught, and they started looking at Indian Shastras from their own let's say their own structures, and they don't get it, what is happening here. And the third point is the evaluation method, evaluation criteria, testing criteria may be different. That we should consider. And also, if you get into the Indian Shastras, Bharatiya Jnana Parampara, then you will understand the scientific nature of the text. Texts themselves, not the content I am telling you. Texts themselves are structured in such a way that they are so logical and so scientifically they are modeled. One example I give you, which is to be understood for all these parameters. For example, in Ayurveda does not treat an insentient body. Body is not a subject matter in Ayurveda. People did not understand that. Therefore, people say, why you don't dissect the body and see the parts of the body, and why Ayurveda says that something, some naras are running there and some nadis are running there. Where are the nadis? We don't see nadis. In body, we don't see nadis. In body, we don't see kavata, pitta, kapha. We don't see sattva, rajas, tamas. This is ridiculous, because in Ayurveda, body is not treated. In Ayurveda, Purusha is treated. Because my idea of Purusha is totally different. It is a sentient body along with the Purusha, and a person inside there is considered to be my object, and therefore I cannot see them separate. My idea is whole. I cannot see them separate. Therefore, my treatment goes along with that. I cannot dissect the body, because body parts are not my subject matter. My body as a whole, and how to keep the body intact, how to keep the Purusha happy, and that is very important for Ayurveda. So we did not consider all these things. We compared apple and banana, and they say apple is so beautiful and banana is so wonderful. That's how it works. You cannot compare orange and apple. So with this, the people tried with translations. But again, translations mislead a lot. I don't go into the details. With this background, I want to show you what exactly we should do now. You can see this Indic thought model, keeping the Panini's language modeling. There are 3 foundation works that you have understood. हमने देखा है, there are 3 important and foundation works. Ashtadhyayi is the one which is base for grammar for any language. People have confused. Ashtadhyayi is grammar for Sanskrit. It is not grammar for Sanskrit. It is base for grammar of any language.
and grammar of Sanskrit for Sanskrit language, both. The second important work in Vyakarana is Mahabhashyam of Patanjali. This deals with language science and analysis of grammatical process, both. It is not just related to grammar, it belongs to language science. So therefore, if you Patanjali, on Patanjali there is a shloka, Padena Vacham Malam Sharirasya cha Vaidyakena Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya cha Vaidyakena Yopakarottam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjali Ranatosmi. In this shloka, Yogena Chittasya Malam. So, Chitta Malam is rejected. Chitta Dosha is rejected with the help of yoga. And yoga is not just, understand, it's not psychology. It is science of psychology, science of, mind. So, we should consider all these are sciences. Science of language, science of health, science of swasthya. So with this, we should understand these works are very basic works for thinking. The third important work is Vakyapadiya. It is not Bhartrhari's Siddhanta. We should consider that this is the Indian contribution to the philosophy of language and conceptual framework of language for language understanding. The complete, language itself is understood with this framework. This is a framework. So keeping these three basic works and their details in mind, I worked on language key to universe. यदि दुनिया को हमें अवगत कराना है, तो if we want to understand the outside universe, the key point is language. Without language, I cannot understand the language world, and I cannot create the world. So, if you go to the philosophy of Bhartrhari, you will see you can create the world through language. Language is the basic seed of the entire universe. It is the basic element of the universe. Why? We can create the world. What is world actually? World is just it is residing in my mind. It is nowhere else outside. For all of you, who am I for you? That's why in the beginning I'm introduced with few words. Those words have created the picture in your mind. I am that. You don't know who am I. You know only those words. Those words, introduction has created some person in your mind. That person is I am for you. And you don't know me actually. You know only that person who is depicted with some words. Even at home, if you think that you understood all of your relatives, no, you never understand any person. The picture of the person is gotten through the words, because without word, I cannot create any word relation. For example, I tell you, someone introduced me to the others as a teacher, and someone introduced me to my daughter as a father and mother, friend. All these are words. Words are creating relations, and these relations create the entire world, universe. Otherwise, discrete objects without having any relation, they don't create any world. World does not exist at all. Only discrete identities, discrete particles exist. For all these discrete particles,
discrete objects. The relations are created through the word. Therefore, world is created by words. If you don't have words, if you don't have Shabda, then you don't have world at all. This is the ultimate theory of Bhartrhari. If you really want to understand the world, you should understand the nature of the word. So, governing principle is language, words, sentences, and symbols and syntax. And the word direct access to cognition or to the language. You know, I am seeing you and you are looking at me through this. Only if this internet is lost and we are lost to each other. If my eye contact is lost, you do not exist for me. That means my relation with you, my access to you is only your eyes and ears, and I am accessing you through only my eyes. One is cognition. One access is cognition. The second access is language. Because once I get to know about you through my eyes and through my indriyas, I can only describe that. That description remains with me. That representation, language representation of yours in my mind, in my world. You don't exist in my world. You exist in my world only with the language representation. If I lose language representation, the representation of my language, that day you don't exist for me. That's why people say memory is very important. If memory is lost, everything is lost. This memory is created through the language. Language traces are called memory. No direct access, only through the language. The third one is cognition and cognition language, relation of cognition and language. Cognition, just without any language. If I perceive something through my eyes, through my sense organs, those objects remain isolated in my mind. For example, if you say this is a pot, I can touch it. There is a feeling of touch. I can see it, some colors, and yet I cannot see this part. I can see only this part, and I can touch this part, another part. Now I can see. I can because of something. I'm imagining the weight. I don't know what is weight, and some taste may be there, some smell may be there. All together, this is happening. This pot is created by me in my cognition. Otherwise, different aspects of the one pot accessed through different parts of the different elements, different parts of the pots are accessed through my different sense organs, and the inputs are coming from different roots, and they are collated, and that picture again created in my mind, and that is associated with one word, that is pot. Pot is nothing but an idea that is created in my mind from the inputs taken from the my sense organs, and they are different: color, taste, actions, touch. Together is not for me. And now the problem is, if I don't have language, don't have a connotation to the cognition, then there is no association. I cannot pick up the pot whenever I want. I can pick up the pot from my mind whenever I want, only through the word. Therefore, you can see Bhartrhari says Shabda and Artha have tadatmya. That means they are not one and the same, but they are associated, closely associated. We cannot separate them. Asosti pratyayo loke yash shabdanugamadriti anubidhamiva jnanam sarvam shabdena bhasate. The thoughts are intertwined in the cognition with the language. So you cannot separate the language and cognition. Therefore,
One is access to the world, creation of the world, and the relation between cognition and the language. These three important theories make us understand that these three, word, content, and the word and the cognition. Triple C, according to Vyakaranas, triple C are so interconnected, you cannot think of one aspect and leave other two aspects and understand the world. Therefore, people have tried with language, because language is accessible in your hand. And as you see, if I want to hold this, my specs, I will hold this part, not this part. Why? Because this part will become dirty or some other reason. I can hold this very easily. Even in suitcase, we have a handle. If I pick up the handle, then the entire baggage comes to my hand. Similarly, language is the handle. If I pick up the language, and if entire language is in my hand, I can pick up the entire universe, entire cognitive world. Therefore, language is used as a handle. I'll come to the next level, this part. Very important part, I think, which you should know. Language modeling was very difficult, because most of the philosophers thought, Bharat ke jo realist philosophers always thought that there is a one-to-one correspondence between the world and the world. That means pot के लिए pot है, इसके लिए वो direct connection है. मैं शब्द बोलूंगा तो उसका अर्थ लोक में है, या तो अर्थ है तो लोक में शब्द मेरा रहेगा, और उनका डायरेक्ट कनेक्शन है, ऐसा सोचा. लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. जैसे जैसे हम वाक्य बोलते हैं, सभी वाक्य के लिए इन रियलिटी में लोक में अर्थ होता है, ऐसा नहीं. हम कहानी जब बोलते हैं, जैसे काल्पनिक कहानियां, अभी तो बहुत काल्पनिक कहानियां आते हैं, पंचतंत्र कहानियां हैं. पंचतंत्र कहानियां have they happened any point of time in the history? They are not historical. They do exist in the language, and they have beautiful existence. They are wonderful. If they don't exist, we lose the beauty of the understanding of the world. Panchatantra stories, Panchatantra characters exist in the world reality. That means there are two important things. There is a world which is created by the language, which represents the outside world. That means I can see only one part of it, and the other part is real. I believe so. But the language part is representation of the world, which is real for me. The other part is not real for me. For example, if someone says XYZ is a thief, and it is created in my mind, then I always doubt. Whenever something happens, I always doubt that he is the person who has thefted. I mean, who has stolen the object, because he is created in my mind. This may not be corresponding to the reality, but it exists. So, in that sense, language and the world. Sometimes in the world, some reality, something will happen. I want to describe it. For example, some glass has fallen and broken. After that, I have to describe it. When I describe it, I use the words. I use some terms and some sentence structure, syntax. And how to create it. There, for example, if same event can be described in many ways. For example, when I see something has fallen and it is broken, and then I would report to someone, I don't know who has done it, but I have seen falling and then breaking. That's it. वो मैंने देखा नहीं किसने किया है, लेकिन मैं तो ये देखा है कि वो गिर रहा था, गिरने के बाद टूट गया.
मैं उसको कर्तृत्व को हटाना चाहता हूं। कर्ता कोई नहीं है यहाँ पर, वो हुआ है। जैसे हमारी भाषा में, हिंदी में बोलते हैं होता है। किसी ने अच्छा काम किया तो होगा ये नहीं बोलता है, अच्छा काम किया तो मैंने किया है। बुरा काम हो गया तो हो गया है। ये हमारी टेंडेंसी, मतलब मानव का टेंडेंसी ये है कि बुरा काम तो होता है, अच्छे काम करते हैं, क्योंकि कर्तृत्व का भाव अच्छे कामों में होता है। बुरे काम होते हैं उसके लिए करते नहीं है, वो होते हैं। क्या है, हमारे लैंग्वेज का डिफरेंस देखिए। लैंग्वेज उसको इवेंट को, लैंग्वेज के इवेंट का एक पार्ट को देख रहा है, बाकी पार्ट को छोड़ रहा है। मतलब वो हम चूज ही है। एक चूज करने का और चूज करने के बाद डिस्क्राइब करने का जो पार्ट होता है वो लैंग्वेज करता है, लेकिन चूज करने का पार्ट जो है ह्यूमन माइंड करता है। तो इसको हम कहते हैं बड़े सिंपल टर्म्स में मैं कहता हूं इसको विवक्षा। जब तक विवक्षा नहीं है तो रियल वर्ड को एग्जैक्टली लैंग्वेज में हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। रियल वर्ड को एग्जैक्टली लैंग्वेज में कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि कैप्चर करने का, लेकिन हमें दिखता नहीं है। हमारे पास एक ही एक्सेस है, हम केवल प्रतिबिंब देख सकते हैं, उसका रियलिटी उसके अनुसार हम कल्पित कर सकते हैं। दिस इज द रियलिटी। आपको मैं एक दो पिक्चर दिखाता हूं। दिस इज द पिक्चर। कैन यू सी विच वन इज रियल एंड विच वन इज रिफ्लेक्शन? I can't see this. This is beautiful picture, and there is a reflection, and you can't make the difference the difference between the reflection. You cannot make exactly mark the demarcation line. What is the demarcation line here? You can't see that. You can see only reflection and the reality. Where is the reality? Where is the reflection? If I again reverse the picture, even then you will say, oh, this is the reflection, this is the reality. You can't make out of it. It's very difficult. So, similarly, the language has got a kind of reflection. Language is a reflection. Their demarcation line is Vivaksha. Vivakshatah karakani bhavanti. This is Vivaksha. There is a line, and this side is language, that side is the real world. So this Vivaksha, you should understand. I think I am only giving you an idea, and those who have access, that who have studied Paninian grammar and their models, can understand what I am telling. Others may get some idea, and you have to study on your own. So my idea is, this Vivaksha is the demarcation line between the world and real world, and the world created by the Shabda. I don't know how you appreciate it. This is the finest point of grammarians that have contributed to the study of language. I have never seen such beautiful idea. Vivakshatah karakani bhavanti, and karakas, for example, who is the real karta of an event? Nobody knows. Because anything can become the karta of event. If I take one example, cooking has happened. Who cooked it? Vessel may cook it. Vessel is the cooker. We can say cooker. And gas has cooked it because so strong. And the person has cooked it. And sometimes, pressure has cooked it. Who cooked it? All the factors which are involved in the cooking activity are kartas. They are agents. This is how, and my language can represent one, taking one as karta. That is my language representation. But the real event has so many kartas. So one aspect can be represented in the language. That word is real word for me, because I can access the word only through that language. Therefore, this aspect is great contribution of Indian thinkers on language. Why I am telling you? I come to the conclusion. Language modeling 1. Bring focus by change of voice. Boy catches a ball. Ball is caught by the boy. Same event, different representations. Shift focus. Now, this is a very common example in linguistic field. Sweet. See, he eats sweets. No, sweets he eats. He eats sweets. They have focus, different focus. Because language is giving the focus.
Real event, we don't know. Divert focus by change of subject. She cooks, cooker cooks, and fire cooks. Now coming to यहाँ आगे नहीं जाता हूं मैं. जैसे लैंग्वेज मॉडलिंग में वर्ब है, फैक्टर्स है, ऑब्जेक्ट्स है, प्ले फिक्स रोल्स. हम रोल असाइन करते हैं. वास्तविक रूप से देखिए, कोई घर में पुराने काल में तो फायर या तो काष्ठानि पचंती प्रयोग होता था. काष्ठानि पचंती यानी जो कुकर कुक्स जैसा है. वेसल कुक्स, वेसल कैसे कुक कर सकता है? यदि व्यक्ति नहीं है कुकिंग करने वाला तो वेसल अपने आप को कोई कुछ कुक नहीं कर सकता. लेकिन फिर भी वेसल बहुत अच्छा है. तो जैसे रूट डोसा, आपको डोसा मिले वेसल का बहुत इंपॉर्टेंट है. जो डोसा करने वाले लेडीज हैं यहाँ तो पता होता है उनको. हर वेसल में डोसा नहीं कर सकते आप. डोसा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, कोई वेसल कर सकता है, क्योंकि वेसल के हिसाब से डोसा बनेगा. तो इसलिए वेसल कुक्स डोसा के केस में तो ठीक है, क्योंकि उसमें ठीक ढंग से वेसल यदि नहीं होगा तो कोई अच्छा डोसा पकाने वाला भी पका नहीं सकता. इसलिए वेसल कुक्स ठीक है वहां पर. तो इस फोकस को बताने के लिए मुझे मेरा चॉइस जो है, लैंग्वेज चॉइस अलग हो गया. तो ये लैंग्वेज चॉइस हमेशा हमें एक पिक्चर देता है. तो वह इसलिए मैं कहता हूं वर्ल्ड क्रिएट द वर्ल्ड. तो मेरी दुनिया में शब्द के द्वारा आपके मन में दुनिया क्रिएट कर सकता हूं. वही दुनिया आपके लिए रियलिटी होगी, कोई दुनिया आपके लिए नहीं रहेगी. इसलिए बहुत बड़े बड़े लीडर्स कैसे लीडर बनते हैं? उनके शब्द में जो वो आपको एक दुनिया दिखाते हैं, वो दुनिया में वही बड़ी दुनिया है. तो उस दुनिया को देखते देखते आप उनको वोट देते हैं. तो इसलिए लीडर्स ऑलवेज यूज द वर्ल्ड टू क्रिएट द वर्ल्ड. ये देखिए इंपॉर्टेंट है. रियलिटी है, रियलिटी के बाद विवक्षा है, स्पीकर इंटेंशन है. उसके बाद कारक का असाइनमेंट है, उसके मैं रोल असाइन करूंगा. जैसे डायरेक्टर हूं तो मेरे डायरेक्टर को किसको क्या रोल असाइन करना है मैं जानता हूं. वो उसका नाम है कारक. उसके बाद मैं विभक्ति का असाइन करता हूं, क्योंकि वहां कुछ रूल है, लैंग्वेज रूल्स है. मैं ये कारक है तो ये रूल है. तो जैसे किंग का रोल है तो उसका ऑर्नामेंट वगैरह होना चाहिए. यदि ऋषि का रोल है तो उसका ऑर्नामेंट नहीं होना चाहिए, उसमें केवल एक धौत वस्त्र होना चाहिए. वैसे कारक रोल असाइन करने के बाद उसका विभक्ति क्या होनी चाहिए, उसके लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज के लिए अपना अपना एक रूल है. उस रूल के हिसाब से मैं केस सेंडिंग से नॉर्मली फिक्स करूंगा. उसके बाद सेंटेंस फॉर्म होगा. That sentence is heard by the listener and he opens up and understands the case ending and tries to reveal the karaka assignment, and he can reach up to the vivaksha of the person. Then the reality is there for him, whatever he understands. Now there is a demarcation line between the reality and the world. That is very important, and Panini's contribution lies there. What is this? Actually, this language modeling, why we should understand and what is the importance of this? I go to this point. See, in language, if you see a sentence consists of so many words, and word consists of prakriti and pratyaya, root and the suffix, and prakriti again consists of so many varnas, phonetics. There is dhvanis, and those dhvanis again. Today you might have heard this quota theory. See, that's very interesting. I have this analytical model with me, but this model gives an idea about the language. This is not the real reality. I'm not saying that in my sentence, if you start hearing the syllables, if you start hearing my u, e, a, my phones, phonetic utterances, then you are trapped. You will not understand my sentence. Because you are not focusing on my phonetic utterances. Instead of that, you are focusing on the whole sentence. Therefore, you are understanding. If you start analyzing my word by word, vibhakti by vibhakti, and connecting them, and then start understanding constructing the words and the sentences, then you are lost there. You never understand any speech.
because you are trained in such a way that you can understand the whole and get the idea, therefore you are understanding. What does grammar do? ग्रामर हमारे लिए इसलिए दिया गया है, इसको हम इसके पीछे जितने भी साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, मतलब ये मैं साइंस नहीं बोलता हूं, इसको मॉडल बोलता हूं, तो साइंटिफिक मॉडल है। मुझे पता नहीं है नंबर है कि नहीं, 1 2 3 जो भी नंबर है, नंबर के बारे में मुझे पता नहीं है। नंबर्स में भी फिक्टिशियस आइडियाज, mathematicians would say numbers are real, but for a person like me, for a literary person, numbers are not real. They may exist or may not exist, but उसके द्वारा कार्य तो हो रहा है, कुछ हमारे सेंटेंस के द्वारा कार्य तो हो रहा है। उसमें यदि हम मीनिंग तो आ रहा है, मीनिंग कैसे आ रहा है इसमें किसी ने पूछा तो मैंने कुछ मॉडल दिया। इस मॉडल के आधार पर आप जब भी चेक करेंगे तो इसी मॉडल में आपको एग्जैक्टली आपको ये इनपुट रहेगा, ये आउटपुट रहेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। तो जैसे मेरे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का मॉडल देते हैं, वो क्या किसी ने देखा है कि अंदर जाकर? साइंस भी ऐसे मॉडल हजार मॉडल देते हैं, वो कोई किसी ने देखा नहीं है। दोज मॉडल्स आर जस्ट टू एक्सप्लेन द फिनोमिना, एक्सप्लेन द टोटलिटी ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। व्याकरण में भी ऐसे मॉडल दिया गया है, वो इट एक्सप्लेन्स द ब्यूटिफुली, इट एक्सप्लेन्स द लैंग्वेज टू रियलिटी। लैंग्वेज टू रियलिटी जो चल रहा है वो फिनोमिना एक्सप्लेन करता है। तो इससे, इस बेसिक स्ट्रक्चर के अंडरस्टैंडिंग के कारण से हम बहुत सारे विषय को समझने के लिए हमारे लिए आसान हो जाता है। मैं यहां आपके आगे जाता हूं। जैसे यहां देखिए, एक प्राकृत ध्वनि है, फोनेटिक पार्ट्स। फोनेटिक पार्ट्स, when I speak only, I utter the phonetic parts, but together they make a sense. Otherwise they don't make any sense. They don't have any sense at all. Sense में S E N S E ऐसा मैं यदि उच्चारण करूंगा तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। सेंस उसका उच्चारण है, उसका मीनिंग है। कैसे आ रहा है? क्योंकि ऐसे आ रहा है, आपके मन में दोनों एसोसिएटेड है। सेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट इन योर माइंड एंड सेंस का मीनिंग भी एग्जिस्ट इन योर माइंड। उसके बाद मैं जब बोलूंगा तो केवल एसोसिएशन हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? वैकृत ध्वनि। मतलब प्राकृत ध्वनि से वैकृत ध्वनि जब बन रहा है, मतलब वो टुगेदरनेस जो हो रहा है, वो एक कॉमन पैटर्न जैसे बन रहा है, उसके द्वारा आपके माइंड में एक एक शब्द नहीं जा रहा है, वो एक सेंटेंस जा रहा है। उसको आप शब्द के रूप में एनालिसिस कर रहे हैं। इसलिए कभी कभी संस्कृत में एक ही वाक्य अलग अलग ढंग से, पुत्रो न पुत्री, मतलब पुत्रो पुत्रः न पुत्री, ये भी हो सकता है। पुत्रः न पुत्री, ये भी हो सकता है। और संस्कृत में तो आप कहीं भी पदच्छेद कर सकते हैं। जैसे पदच्छेद करेंगे वैसे आपका व्याख्यान हो पाएंगे एक एक श्लोक के लिए। इसलिए असत में इतने उपनिषद वचन है, उसके लिए हजारों अर्थ निकलते हैं, क्योंकि उसका पद छेद जो है अलग अलग ढंग से किया जा सकता है। द सीक्वेंस ऑफ द वर्ड ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसलिए प्राकृत ध्वनि से जब वैकृत ध्वनि किया जाता है, वो स्पीच बन जाता है। स्पीच से जब स्पोर्ट बनता है, वहां तक जो प्रक्रिया है उसको अत्यंत एक व्यवस्थित तरीके से पाणिनि के मॉडल में हम देख सकते हैं। तो इस स्पीच मॉडल को यदि हम अवगत करेंगे तो हमारे इंडियन इसको पाणिनि ने कैसे किया है, तो आपके सामने में इस पूरे मतलब स्पीच की जो दुनिया है, उस दुनिया को हम एक मॉडल के रूप में समझना चाहिए। इस मॉडल को समझने के बाद, क्योंकि सेंटेंस कितने प्रकार के होंगे उतने प्रकार की दुनिया नहीं रहती है। दुनिया एक प्रकार की, उस दुनिया के लिए
प्रतिनिधि करने वाला, रिप्रेजेंट करने वाले सेंटेंस अनेक प्रकार के होते हैं, क्योंकि कितने प्रकार के स्पीकर होंगे उतने प्रकार के सेंटेंस होंगे। इसलिए एक ही घटनाक्रम को चार लोग यदि बताते हैं तो अलग अलग ढंग से बताते हैं। ये पॉसिबल है वर्ल्ड की दुनिया में, शब्द की दुनिया में। इस घटनाक्रम को अलग अलग ढंग से बताने वाला शब्द को व्याख्यान करने के लिए पाणिनि का जो मॉडल है, द बेस्ट मॉडल इन द वर्ल्ड। इसलिए ये मॉडल हमारे प्राचीनों ने दिया है, इसको समझना चाहिए। इसके बाद इसको पाणिनि ने कैसे, मतलब रूल के मॉडल से दिया है, वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपके सामने और एक स्लाइड दिखाता हूं। यू विल वंडर हाउ ही स्टार्ट्स लुकिंग एट द वर्ल्ड एंड हाउ ही कम्स टू द रूल्स। दुनिया के जो पिक्चर है उसको रूल के अब्स्ट्रैक्शन लेके कैसे रूल बनाता है वो भी आपको देखना चाहिए। देन यू विल अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ शास्त्रास। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं, यहां देखिए आपके सामने एक पिक्चर है। दिस इज फ्रॉम अ टू औ एंड दिस इज फ्रॉम अ टू औ। दीज आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ द संधि। फॉर एग्जाम्पल हमारे अ टू आई औ तक जितने भी वर्ड्स है, इसको आप ऐसा अरेंज करेंगे तो अ प्लस अ बिकम्स अ प्लस आ बिकम्स अ followed by E becomes A, and E followed by E becomes E followed by U becomes U. All these possibilities and results are given in the first chart. Then how many rules? I have given this to our IIT students once. Then I told them, tomorrow morning you come back with rules, and come back with rules written in the format of algorithm लिख के आ जाओ। बहुत लोगों ने प्रोग्राम लिखे आए। मैंने कहा कितने रूल्स है आपका? उन्होंने कहा सर जितना सिंपल है सर, अ टू आओ जितने वर्ड्स है 144 हो जाएंगे। मैंने कहा 144 लिखना है तो आपका क्यों जरूरत, इंटेलिजेंस क्या है इसमें? 144 तो वैसे ही होते हैं, मैं जानता हूं। लेकिन पाणिनि ने क्या किया है यहाँ पर? पाणिनि, यू कैन इमेजिन हाउ पाणिनि हैज कैप्चर्ड द नेचर ऑफ द लैंग्वेज थ्रू अब्स्ट्रैक्शन। ये ब्यूटीफुल है। ये उदाहरण एक ही बता रहा हूं मैं, इतने 100 एग्जांपल हमारे पास है पाणिनि ने कैसे किए। केवल 4000 रूल्स में, 4000 सूत्रास में पूरे लैंग्वेज को कैप्चर किया उन्होंने। केवल संस्कृत को नहीं, ये समझिए आप, पूरे लैंग्वेज फिनोमेना को कैप्चर किया, पूरे वर्ल्ड के सभी लैंग्वेज के नेचर को कैप्चर किया है। इसका रूल 144 हो गया। कुछ लोगों ने थोड़ा कम किया, 120 तक किया। कुछ लोगों ने आकर कुछ जोड़ दिया, तो क्लब करके उन्होंने कुछ कम कर दिया। फाइनली आई शोड दिस पाणिनि's रूल। यहाँ पाणिनि के जो अष्टाध्यायी पढ़े हुए विद्वान है तो उनको पता चलेगा। तो 6 रूल में पाणिनि किया है, ओनली 6 रूल्स। कैसे किया उन्होंने? ही कुड सी द कॉमन फीचर्स इन दिस। आई हैव गिवन द इन द कलर फॉर्म। दिस इज वन कॉमन idea. This is one common idea which is shown in yellow, and you can see here. So after looking at this, Panini has come up with some abstraction. Abstraction कैसे? साधारण धर्म देखा उन्होंने। साधारण धर्म देखने के बाद उसके लिए एक रूल बनाया जो साधारण धर्म में आ रहे हैं, तो केवल 6 रूल बन रहे हैं। पूरे संधि फिनोमेना को जो वोकल कार्ड के लक्षण है, हमारे वोकल कार्ड के लक्षण है, दिस इज आई एम कॉल्ड, व्हाई आई एम टेलिंग यू, आई कम टू एट द एंड। इस वोकल कार्ड के लक्षण को उन्होंने 6 रूल में बना दिया, 144 रूल होते हैं। So this is the beauty of Indian Shastras, how abstraction is happening and how beautifully they are keeping the ideas so that you will understand just in minutes. आपको ये संधि समझने के लिए केवल 6 रूल जानना है और 6 आइडियाज जानना है बस। तो इसलिए पाणिनि ने इसको कैप्चर करने के लिए, पाणिनि ने यहाँ क्या कैप्चर किया है? संधि रूल्स को कैप्चर नहीं किया है उन्होंने। ये गलत है। यदि हम संधि रूल बनाएंगे तो ये गलत है। मेरा आर्ग्यूमेंट ये होगा, पाणिनि ने वोकल कार्ड का डेफिनेशन दिया है। हमारे वोकल कार्ड में कितने तरीके से साउंड निकलते हैं, उनका कॉम्बिनेशन से कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उसका डेफिनेशन दिया उन्होंने। अ के बाद किया तो ओ अ ई होकर ए बनेगा, ऐसा हमारा वोकल कार्ड का डेफिनेशन उन्होंने दिया है, ना कि उन्होंने कोई संधि रूल नहीं दिया है। दिस इज नथिंग टू डू विथ एनी रूल। नियम नहीं है। पाणिनि को गलत समझा है लोगों ने। पाणिनि ने कभी भी नियम बनाए नहीं है। पाणिनि के कारण से यदि विधि हो गया, पाणिनि के कारण से लैंग्वेज डूब गया, पाणिनि के कारण से लैंग्वेज खत्म हो गया,
पाणिनि के नियमों के कारण से संस्कृत मृत हो गया, ये सारा कहां से लोग हम समझ रहे हैं मुझे पता नहीं है। पाणिनि हैज डिफाइंड, पाणिनि हैज नॉट डिफाइंड द लैंग्वेज, पाणिनि हैज डिफाइंड द वोकल कार्ड नेचर, नेचर ऑफ द वोकल कार्ड, कैसे साउंड निकालेगा उतना बता रहा है। तो ये साइंस है, वोकल कार्ड साइंस है। आप इसको साइंस नहीं समझेंगे तो क्या समझना है मुझे पता नहीं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, because this is not static, there is a variance, there are so many variants। पूरे भारत पर पाणिनि ने देखा, इतना बड़ा देश के इतने लैंग्वेज को, इतने लैंग्वेजों के उच्चारण को उन्होंने कैप्चर करने के लिए उन्होंने अब्स्ट्रैक्ट बनाया। ये पाणिनि का आकार जो है रियल अ नहीं है। दिस इज द which represents the entire इंडिया का जितने भी लोग अ उच्चारण करते हैं, सारे बंगाली का अ है और केरल का आ है और नॉर्थ इंडिया का अ भी है, सारे रिप्रेजेंट करके एक ही अ को उन्होंने उच्चारण किया। दिस इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑल टाइप्स ऑफ वेरिएंट्स, अष्टादश वेरिएंट्स का एक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये साइंस है, क्योंकि अ पाणिनि का अ डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये केवल नंबर जैसा है और पाणिनि का अ रियल वर्ड में नहीं है। और रियल वर्ड में बंगाली का ओ है और केरला का आ है और हिंदी का अ है। तो इस दृष्टि से एक डायनेमिक वर्ल्ड को कैसे कैप्चर करना पाणिनि ने, और एक आगे लेकर एक स्लाइड देखिए, दिस सो ब्यूटीफुल। शास्त्र का पाणिनि कभी पाणिनि ने कोई नियम नहीं बनाया, उसको डेफिनेशन, इसलिए मैं कहता हूं इसको लक्ष्य, महाभाष्यकार ने कहा इसको लक्षणम, लक्षण मैंने डेफिनेशन। पाणिनि अष्टाध्यायी इज डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। जब लैंग्वेज फ्लोटिंग है, डायनेमिक नेचर का है, वो स्टेटिक नहीं होता। जैसे आप वज्र को देखिए, वज्र इज कोई डायमंड इज स्टेटिक, वो चेंज नहीं होता है। उसका डिफाइन करना आसान है, उसको पिक्चर करके रखो, डिफाइन करो, वैसे आसान है। जो मर्क्यूरी होती है वो डायनेमिक होती है, तो उसका डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। तो लैंग्वेज इज डायनेमिक, उसका डिफाइन करना, उसको एक लक्षण बनाकर उसको समझाना, ये बहुत मुश्किल है। तो पाणिनि ने इसके लिए कुछ अलग ढंग से लक्षण बनाया। वन इज एक शास्त्र, उसमें उत्सर्ग अपवाद नियम बनाया। उत्सर्ग नहीं मैंने बाय डिफॉल्ट सम रूल लगते हैं जो कॉमन है, तो उसके बाद अपवाद होते हैं। अपवाद यानी उसके एक्सेप्शनल केसेस। तो एक्सेप्शनल केसेस को आप कंसिडर करने के लिए हमेशा शास्त्र में एक लूप रखा है, तो यू कैन कीप ऑन एडिंग एक्सेप्शंस। इसलिए उत्सर्ग नियम का जो होता है, बाय जनरल रूल्स के लिए कोई बाधा नहीं होती। जनरल रूल्स आर जनरल रूल्स, you can keep on exceptional rules in the Shastras, keep on adding exceptional rules. So this structure पाणिनि का जो है, इसी कारण से पाणिनि के बाद वार्तिककार आता है, वार्तिक के बाद वृत्ति आता है, सभी लोग अपने ढंग से वो शास्त्र को ऐड करते रहते हैं, एक्सेप्शनल रूल को ऐड करते रहते हैं। इसलिए उत्तरोत्तर मुनि नाम प्रामाण्य, मतलब आगे आने वाले जो आज यदि मैं कुछ ऐड करता हूं तो पाणिनि से मैं प्रबल हूं, ये मतलब नहीं पाणिनि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी श्रीनिवास वरखेड़ी कैन ऐड वन मोर रूल सो दैट पाणिनि कैन बी डिफाइंड। ये हमारी शास्त्र परंपरा है, तो हमारी शास्त्र परंपरा कभी रुकी नहीं है, उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। आज मैं इतना यहाँ आपके सामने मेरे कुछ लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग जो है भारत में, उसके बारे में जो सम ऑफ द एस्पेक्ट्स व्हिच आर वेरी पर्टिनेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। मैं अभी यहाँ रुकूंगा, कोई क्वेश्चन है तो आपसे मैं ले लूंगा। सर, हाउ संस्कृत ग्रामर इज यूजफुल फॉर कंप्यूटर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स? Very tough question. It is often said that Sanskrit is very close to computer, and even Sanskritists, the scholars from Sanskrit side also claim this, but they don't know in what way. And even the scientists from computer science said, "Oh, Sanskrit is very close to," so they don't know how. This problem we need to solve in this way. Sanskrit is a natural language. As a natural language, it cannot become a language of robotics. Okay, but Sanskrit has got a special feature
has got a special feature that it can be considered, considered to be a candidate for an artificial language also. If you see Panini's rules, if you see Panini's language, he has used a particular language to explain the rules of the grammar. That language is technical language. It is not a language that is created by Panini. It is not symbolic language. Like, in C++, we use language that is completely symbolic language, which uses only symbols. And that doesn't mean, I cannot speak that language. I cannot speak C language. I cannot speak any language of computer. I can only code. I can only write. But Panini's language, which he has used to articulate his rules, that language is not an artificial language. It is very much Sanskrit. It is a natural language and having all the features of artificial language. That means unambiguous expression is possible in Sanskrit. This paribhasha, this paribhashita language, this technical language, Sanskrit, can be used for representing the world in the computers. That is possible. This language is conceived long ago, 3000 years ago, when computers did not exist. Then Panini has articulated this language. Therefore, people said Panini's language, Sanskrit, could be a good candidate for artificial language. Can a cogent statement have a false conclusion? False conclusion. Yes. Cogent statements are possible. Conclusion is individual. It's subjective. Therefore, I don't think that conclusion is possible in a community. But conclusion is possible within. Cogent statement is possible in community. We together can state, without any inconsistency. But that statement will lead to a conclusion which is made by the selves. So every individual has to conclude something. Otherwise, for a community, conclusion is very important. For a community or for a team or for a nation, conclusion is not possible, but consensus is possible. Samanvaya is possible.